So previous class, I told you about the superposition principle. And in superposition principle, I told when two waves superimpose with each other, three cases may arise. What are the three cases? Please tell me. First, number one. Interference. Number two. Standing wave. Number three. Beats. But interference, I told you, we'll discuss in which class? 12th. Class 12. Last 12. But standing wave, we have discussed some part of a standing wave. Because I told you standing wave is of how many types in previous class? How many types of standing waves are there? Depending on the type of a wave, depending on the two types, depending on the type of wave. What are the two types? longitudinal standing wave and transverse standing wave. Very good. Longitudinal standing wave and transverse standing wave. But we have discussed which standing wave? Transverse. Transverse standing wave we have discussed in the previous class. But today we'll discuss which wave? Longitudinal. Longitudinal standing wave. So longitudinal standing wave. So transverse standing wave, I think I show you also the musical instrument where the longitudinal standing wave is formed. Sorry, transverse standing wave is formed in the previous class. So transverse standing wave को musical instrument हुए ना जोड़ा सो string वाला musical instrument. For example, Harmonium, guitar. Violin. harmonium string. Guitar and violin. Okay, जो थ्री सब string वाला musical instrument ସେମାନେ ସବୁ operate हुअन्ति by transverse standing wave. ସେମାନଙ୍କର length को तमे vary करेगी frequency को vary करूथिलो बोले सारे गामा पाधा नी सा 7 fundamental frequencies बाहर करिकी तमे सेतरे केते कोन musical instrument को नेकी musician माने करंती. ओके केमती diameter को change करके frequency change करूथिलो length को change करके frequency change करूथिलो. We have discussed all this. Length को change करंती समस्त मार्क जानि छ तो मार्क कर finger को केमती से wire को different जगह रे finger को tap करके effective length को change करंती while playing the instrument. जो माने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजौथिबे जो माने न बजे कि देखि थिबो तमे जानिथिबो फिंगर को से इंस्ट्रूमेंट ऊपर केम डिफरेंट डायरेक्शन टैप करंती. ओके टू चेंज द लेंथ ओनली. और डायमीटर तो ऑटोमेटिकली से वेयर डिफरेंट थाय डिफरेंट वेयर रे सने प्ले करके डायमीटर अनुसार फ्रीक्वेंसी अलग अलग पांती. बट आज हम डिस्कशन करबा लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव. लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हेथिबो ठीक है गेस कला फ्लूट. जोटा कि हमें फिजिक्स रे फ्लूट रो ना कहबा ऑर्गन पाइप. ओके सो टुडे विल डिस्कस एक्चुअली व्हाट ऑर्गन पाइप. माइथोलॉजी रे the great lord was using this device. Who is the great lord? Lord Krishna. Lord Krishna. Lord Sri Krishna. Sri Krishna was using this device, okay, in Mahabharat. Right? So this flute. So this organ pipe is of two types. So what are the two types of organ pipe? One is Open and one is closed. One is closed organ pipe, one is open organ pipe. Closed organ pipe doesn't mean it is closed from both the sides. Closed organ pipe means it is closed at one side and one side is open. Otherwise, how will send the air there inside this? Okay. So one side is closed and one side is open. But in open organ pipe, what happens? Both sides are open in open organ pipe. Closed organ pipe, one side closed, one side open, and in open organ pipe, both sides are open. Then Lord Krishna was using which organ pipe? Open Open organ pipe or closed Open. organ pipe? Sir, open organ pipe. Open organ pipe. Okay. How you know it's open organ pipe? You have seen? Huh? How you know that Lord Krishna was using open organ pipe? You have seen the organ pipe? Tell me. Then how you know it's open? We have seen it in the images. In images you have seen.
It's always open, or sometimes closed, sometimes Sir, open. it seems like it's open. Achha, it's very good. Okay, so in images you have seen it's open organ pipe, right? But some people also sometimes hold a closed organ pipe in the to the Lord Krishna in images, as well as what happened there. So actually, they don't know the concept. They don't know the difference behind this open organ pipe and the closed organ pipe. That's why they don't know what actually Lord Krishna was using. That's why they give any or one organ pipe, any may be closed, may be open. Okay, they decorate the flute and give it, right? But now we see the actual difference, the concept behind using the open organ pipe and closed organ pipe. Now, let's first start closed organ pipe. Let's discuss first a closed organ pipe. So what happens in closed organ pipe? Let's first discuss. So closed organ pipe, we can consider one organ pipe here. Closed organ pipe. You consider one organ pipe where like this of length L. This organ pipe is of length L. It's one end x is equal to 0 here. This is one end. And the other end x is equal to L. This is the organ pipe. It's one end is at x is equal to 0 and the other end is at x is equal to L. Okay, now you understood the closed organ pipe, how it is closed at one end. So Yes. we, Yes, sir. our procedure will incident one wave, that wave gets reflected back and both waves superimposed with each other. This is our procedure, superposition in standing wave. One wave go, it gets reflected, then it's added with another wave. Okay, so now you see, we'll let the expression of incident wave. What is the expression of incident wave? Wave will incident from this side, because I have made the figure like this. Okay, so what is the equation of incident wave? Equation of incident wave, what will write here? Y1 is equal to R sine omega t minus kx or plus kx. Please help me. What will write here? Plus kx. Y plus kx? Opposite direction. No. Negative x-axis, not opposite like this. As it is going negative along the negative x direction, that's why it is plus kx. I told you. But a wave direction can be direction of propagation. Purva class में discussion करते plus kx. Okay, it's going in this direction. Negative x-axis. Now everybody understood? Yes, sir. Okay, then. But I did here one blunder mistake, one very important mistake I did here. Who can tell me what mistake I did here? Can anybody tell me? Yes. Longitudinal standing wave we are discussing means the incidenting wave is a longitudinal wave. But I'm writing the equation of transverse wave. How you know I am writing the equation of transverse wave? Can you able to mark? X is the direction of propagation. And where is the direction of oscillation I have kept? Sir, minus. Direction of X-axis. oscillation is which axis? So minus x-axis. Direction of Y-axis. oscillation. Oscillation is Y-axis. this one. Direction Yes, of sir, oscillation y-axis. is y-axis. And wave propagation is x-axis. So what is the X-axis. angle between them? 90 90. degree. So it is transverse wave or a longitudinal wave? Transverse. But we are discussing which wave? Longitudinal. Longitudinal wave. Now you could able to mark what mistake I have done. Actually, this is not my mistake. Many students do this type of mistake and many teachers got the mark in exam due to this. That's why I told you. Okay, so don't write here y1. Actually, we should write here also x, because propagation is x as well as oscillation is also along x. Okay, but if you write both x, it will be confusing. That's why I wrote here s1. No problem. I wrote here s1. Some books are also writing like this. Why?
But some teachers cut the mark. There is a controversy. Why will go into the controversy? We'll write S1. Now we are out of controversy. Okay. S1 is equal to R sin omega t plus Kx. Now you understood how you remove the controversy. Okay. But some books are also writing Y. Very well known books that they are writing also Y. But you forget it. So now the wave strike and gets reflected. What is the equation of reflected wave? Tell me. R sin, it's a closed boundary. When the wave strikes in a closed boundary, the wave, now you tell me, you already know this. What light omega t, minus kx or plus kx? Plus cakes. Minus. Minus cakes. Minus Kx. Minus kx. But it is along propagating along positive x-axis. The reflected wave is propagating along positive x-axis. Then is there any phase change? Because this is a closed end boundary condition. When the wave strikes on a closed end, there is a phase Change. Plus change pi. of pi. Pi. So the phase change of a pi. So pi phase change happens here. So that's why if you sin pi plus theta, now it becomes minus r sin omega t minus kx. Hope everybody now understood. Okay. And when these two waves get superimposed on each other according to superposition principle, S is equal to S1 plus S2. Now you add them. R you take a common, sin omega t plus kx, then minus sin omega t minus kx. Okay. Now use the trigonometric relation. You have already done it before. Use the trigonometric relation here. Tell me, what will the trigonometric relation? Sin a plus b minus sin a minus b. What is the relation? 2 sin A sin B. Cos A sin B plus sin A. 2 sin a plus b minus sin a minus b. What is the trigonometric relation? Don't do mistake, right? Tell me the proper trigonometric relation. Quick. Sir, 2 cos A plus B by 2 sin A minus B by 2. Sir, 2 cos 2. Yes. cos 30 sin kx. 2 cos. Sir, omega t 2 cos A sin B. I think I am correct. 2 cos A sin B. Is it correct? Okay. Yes. See the trigonometry formula in mathematics. So this is 2r sin kx cos omega t. So this is the equation of the longitudinal standing wave formed in a closed organ pipe, where this one is called as what? Amplitude. Amplitude. Where this one is called as amplitude, and you know I had told you earlier, amplitude varies with x. Amplitude varies with x. Standing wave रे बड़ जिनस तुमको कही amplitude गोटे पॉइंट रे केबे कांस्टेंट रहेनी, that varies with x. x vary करिवा सहित amplitude भी vary करता है. Okay, so now let's come and analyze this one. ए पॉइंट जेतु क्लोज हो जायछि, एटी नोड फॉर्मेशन हबो ना एंटी नोड फॉर्मेशन हबो? Sir, no. नोड फॉर्मेशन हबो. ए पॉइंट जेतु ओपन अछि, एटी नोड फॉर्मेशन हबो ना एंटी नोड फॉर्मेशन हबो? ओपन अछि, Antinode. Node. here antinode is formed. तामाने आमे physically we understand कि एठी नोड फॉर्मेशन हबो, एठी एंटीनोड फॉर्मेशन हबो. ओके, एति जिंस समस्त बतन बुझी गेल कोन कहली ना? कार कोई डाउट होला जे मते पछरो. ओवर हमरा एम्पलीट्यूड खाली दरकार. देखो बतन म एम्पलीट्यूड को खाली एम्पलीट्यूड एक्सप्रेशन को नेली, बिकॉज़ एम्पलीट्यूड varies from point to point. Let's now consider only amplitude. See here, amplitude is coming to r sin kx. Okay, this is the amplitude expression. हमरा बतन एटा हम पे सबुठ इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन. म देखो ए पॉइंट रे नोड फॉर्मेशन हबो. देखियो हम नोड फॉर्मेशन होछ कि नै, लेट्स चेक. जतल x = 0 हे गला,
when x is equal to 0, tell me what is the amplitude? Sir, 0. Sin 0 पकेले 0 आसी जाउची, then we are correct. Amplitude 0 आसला त माने जगटा नोड, सतरे भी जगटा नोड अछि हला। एठी कोन अब amplitude 0 ना maximum? Maximum. 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 त माने x is equal to l रे amplitude कोन हबो ना maximum? Maximum होबा को बाध्य, it has to be maximum. फिर maximum हबो ताले sin k तामाने कोटा maximum हबो ना sin k l is equal to maximum. मु x जगह रे बतन l पके दिले, एटा रे ही सब जगह अछि, 2 are the constant ना, तो sin k l has to be maximum. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Maximum means sin रो maximum value केते के मते कहबो? Plus or 1. Plus Or- 1. प्लस और -1 -1 रे भी किछि फरक पड़िबनी, बिकॉज़ एम्पलीट्यूड ऊपर को +1 हेले तळ को -1, तळ को -1 रे भी मैक्सिमम हला। एठी प्लस माइनस रे किछि फरक नै, बुझ परछो त अनट? कने ऊपर Yes, को sir. प्लस हेले, ऊपर को +4 हेले तळ को -4 रे भी मैक्सिमम, बिकॉज़ दैट इज आल्सो एम्पलीट्यूड ना। ओके, तो प्लस और -1, ये प्लस और -1 हेले व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ kl? कोन सो वैल्यू हेले प्लस और -1 हबो? Sir, pi by 2. π/2. नेक्स्ट 3 pi by 2. नेक्स्ट 5 by 4. like this, am I correct? एमती चलिबो। अच्छा एमती Yes. चले त मु लिखि दी परिबे कि 2n - 1 whole into π/2, any problem? No, sir. no, sir. but n केतरो स्टार्ट? So 0 or 1? 1. Sir, 1. n 1 to start. 1 2 3 ... 2n - 1 whole into π/2. But in place of k, now you put 2 pi by lambda into L. Then you tell me lambda is coming how much? Pi cancel from both sides. Then 4 L by 2n - 1. This is now our important expression. This is our important expression. So lambda is equal to 4L by 2n - 1. So now everybody understood? So taking this expression, now we'll proceed for different normal mode of vibration. Again, start from this. Lambda is equal to 4L by 2n - 1. Remember the expression. Lambda is equal to 4L by 2n - 1. Okay. ए एक्सप्रेशन को नहीं कि हम बतन डिफरेंट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन करबा। स्टार्ट अब हमर जेमती पूर्वटारे करिथिले, फर्स्ट केस 1 n is equal to केते 1, आकु कोन कोनती फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन माने अछि फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन जेमती स्ट्रिंग रे कराइतले एग्जैक्ट से बडा। ओके, तो केस 1 n is equal to 1, राइट? तो लैम्बडा केते आसला को? लैम्बडा इज कमिंग हाउ मच if when n is equal to 1? So 4L. Lambda is equal to 4L. So imply that L is equal to Lambda by 4. Lambda by 4. L is equal to lambda by 4. Understood? So lambda is equal to 4L or L is equal to lambda by 4. No problem? Okay. Then what happens here? After that, so L is equal to lambda by 4 means how it oscillates, how the standing wave will be lambda by 4. गोटे सेगमेंट रो लेंथ केते टिके मन पकेला? Pi. केते गोटे सेगमेंट रो लेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, टेल मी। Sir, lambda by 2. लैम्बडा बाय 2, Lambda by बट एठी टोटल लेंथ लैम्बडा बाय 4 आसीबो, त माने गोटे सेगमेंट आसीबो ना हाफ आसीबो ना डबल आसीबो? Half. Half. हाफ आसीबो। हाफ आसीबो दैट टू पुनी एठी नोड होबा दरकार, एठी एंटी नोड होबा दरकार। तमे भी जानि परछो त केमती हितबो स्टैंडिंग वेवटा? दिस द स्टैंडिंग वेव। अंडरस्टूड? लैम्बडा बाय 4 हैला ना नहीं? गोटे सेगमेंट रो हाफ ना नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गोटे सेगमेंट रो हाफ, सो इट इज नाउ लैम्बडा बाय 4। अंडरस्टूड? ओके, जदि एति गेसला तले फ्रीक्वेंसी केते हबो? v nu is equal to v by lambda. लैम्बडा टा केते 4L, v टा केते वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एठी पडिबो
सेठी t by mu रो रूट ओवर पकोथिला एटी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव केते 1. वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव लाप्लास करेक्शन फार्मूला Sir, 330. gamma p by rho root over velocity of sound wave. Okay, gamma p by rho root over. Understood? Right? So new frequency. So this is called new one, and this frequency is called as which frequency? First fundamental frequency. Fundamental frequency. And the harmonic is called which harmonic? First harmonic. First harmonic. Overtone आरंभ हेनी कारण आप पर जोड़ा आसबो हम तक ओवरटोन बोली कहबा. Higher harmonics are called as overtones. पूर्व क्लास में से कतरा कहथिले एटा आउथरे तुमको मन पके दोछि हला. So this is case 1. Then we'll go to case 2. Understood? Now move to case 2. Case 2 को मिजिबा. देखो case 2 रे कोन हबो. Next. Case 2. N is equal to 2. Second normal mode of a vibration. Okay, second normal mode of vibration. Tell me. So केते आसबो लैम्बडा लैम्बडा केते Sir, आसबो 4L by 3. So लैम्बडा is equal to 4L by 2n minus 1 हेले 4L by 3. 4L by 3 माने L केते 3 lambda by 4. 3 lambda by 4. 3 lambda by 4 माने केतटा lambda by 4 So 10टा. 3टा lambda by 4 मते को केमते हेतिबो 3टा lambda by 4 माने हम जदि 2टा lambda by 4 नबा गोटे सेगमेंट हेजिबो बुझुछि त Yes, sir. Yes, sir. 2टा lambda Yes, by sir. 4 नेले गोटे सेगमेंट हेजिबो तापर कोन करबा आ गोटे lambda by 4 रखि दबा हला तो 2टा lambda by 4 नेले गोटे सेगमेंट हेजिबो तापर गोटे lambda by 4 रखि दबा. नाउ अंडरस्टैंड माय पॉइंट. देखो मु 2टा lambda by 4 कर दोछि गोटे सेगमेंट तापर आउ हा lambda by 4 हेगला 2टा बे lambda by 4 रे गोटे सेगमेंट तापर आ गोटे lambda by 4. Any doubt? Understood? No, sir. हेगला केस 2. बट इटी फ्रीक्वेंसी केते हबो लेट्स सी v by lambda lambda जगह मु केते पकेबी 4l by 3 4l lambda जगह 4l by 3 पकले ऊपर को 3 पळेला 3 by 4l v जगह gamma p by rho root over. Got it? Yes, sir. lambda Yes. जगह मु 4l by 3 3 ऊपर को पळेला तळे 4l लेला v जगह पकेली. But it how many times of fundamental frequency? 3 times of new one. Dita को देखा it's 3 times of a new one. So now fundamental frequency becomes 3 times of a new one. If 3 times of a new one, how many times of a fundamental frequency? Accordingly, that is called harmonic. So this is which harmonic? So third. Third harmonic. But a new 3 likely. So this is third harmonic. That is third harmonic which overtone? Second overtone. First overtone. Overtone will start from there. First overtone. Third harmonic, first overtone. Higher harmonic ro overtone start habo. This is first overtone. Okay. It तमन को मन भीतर किछि क्वेश्चन आसुछि कि देखला पर न्यू 1 और न्यू 3 की. So there is no second. So V3 The goes to question is- 3 times V1. Man, question is coming, should come to your mind. First harmonic is present. Third harmonic we are getting. But sir, where is the second harmonic? Second harmonic gala kwade. Second harmonic is missing. तमे closed organ pipe रे second harmonic केबे पाइबो नाही. You will never get a second harmonic in closed organ pipe. Now understood my point? So this is Yes, case sir. 2. Now we'll come to case 3. Case 3 को चला. Case 3 now you do. Case 3 रे कोन हबो मते को. Case 3. Lambda n is equal to 3. N is equal to 3. Third normal mode of a vibration. Lambda is equal to how much? Sir, 4L by 5. 5. 4L by 5. If 4L by 5, then what happens to L? 5 lambda by 4. तामाने केतटा lambda by 4 हैला मते को
So 5टा 5टा lambda by 4 माने हम जब दीटा लेके नहीं जीवा दुईटा हला 2 2 खाली दीटा completely segment ही जीवो 2 segment complete lambda by 2 another complete lambda by 2 and 1 half. So the standing wave formed is like this. The standing wave formed is like this. Got my point? Lambda by 4, 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 then lambda by 4. Total 5 टा lambda by 4. बुझियोस तो मु केमती करूची एटा गोटे सेगमेंट रो अधा को कहंती lambda by 4 नै से अनुसार मु दीटा फुल कली आ गोटे हाफ कली. ओके 2.5 टा राइट lambda by 4. ताले एटी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को न्यू मु किछ न्यू 1 न्यू 2 दोनी बिकॉज़ देखला पर जे देबी v by lambda केते 4l by 5. So 5 by 4l gamma p by rho root over. How many times of fundamental frequency? 5 times. 5 times. 5 times of nu 1. What is your conclusion? Which harmonic? 5th harmonic. 5th harmonic. Which overtone? Second Second overtone. overtone. Second overtone. Complete. Okay. Second overtone. So then come to n is equal to n. N is equal to n. Nth normal mode of vibration. Last case n is equal to n. Nth normal mode of vibration. N is equal to n. Then figure तो एठी हम ड्रॉ करि पारिबानी बिकॉज़ एक्जेक्टली हम जानि ने केतेटा आसीबो पर हमें खाली या देखि परिबा लैम्बडा हला केते 4l by 2n minus 1 बस आ तो हम फिगर एठी कर परिबानी खाली फ्रीक्वेंसी देखि दबा फ्रीक्वेंसी nu n is equal to how much tell me एटा nu 5 हला ओके तो फ्रीक्वेंसी केते आसबो को मु nu n काहे देबे एठी फ्रीक्वेंसी केते आसबो को v by lambda तो lambda टा 2n minus 1 by 4l तळे lambda अछि उल्टी गला gamma p by rho root over. Then the frequency what is coming, how many times of fundamental frequency? 2n 2n minus 1. minus 1. 2n minus 1. Then this is which harmonic? Nth harmonic. 2n minus 1. 2n minus 1th harmonic. This is 2n minus 1th harmonic. Okay, 2n minus 1 times na. Okay, so 2n minus 1th harmonic, right? Then which overtone, who can tell me here? N minus 1 overtone. How n minus 1 overtone? Can you explain me? Sir, ଯେମିତି କି second overtone. Sir, ଯେମିତି କି third overtone ଟା sorry third case ଟା second overtone ଆସିଥିଲା sir ଯେମିତି nth case ଟାରେ n minus 1 overtone ଆସିବ. Okay. Third case n is equal to 3 re second overtone. Okay, 3 minus 1. So like this nth re n minus 1. Okay, good guess. Okay, n minus 1 overtone. सेमती कहि हबो. ओके ठीक अछि चलेला बट आ गोटे भी तमे एमती कहि परिबो देखो हार्मोनिक ओवरटोन देखले एठी हार्मोनिक ओवरटोन भीतर गैप केते 3. तो n is equal to 3 means हार्मोनिक ओवरटोन भीतर n रो वैल्यू जेति कि सेति कि गैप ही आसी नै कि n रो वैल्यू जेति तने n गैप तले एठी एथरु n टा को माइनस कर देले हे गेला पळे आसला n minus 1 ओवरटोन. ओके एथरु n टा माइनस कर देले कारण अंक भीतर गैप टा केते हबो n अंक भीतर गैप टा केते n राइट. तो ओवरटोन और हार्मोनिक भीतर गैप हबो केते n राइट. एथरु मो n टा को माइनस कर देले ऊपर n minus 1 थासो n minus 1 तो ओवरटोन. So this is all about closed organ pipe. Everybody understood how we did closed organ pipe? Once you get the expression, then nothing. Then start the normal mode of vibration. One normal mode of vibration you will write, you will get 1 mark. Okay. Then we'll go to which organ pipe? Open. Then we'll go to closed, open, closed over. Then we'll go to open organ pipe. Now let's start open organ pipe. Open organ pipe. Let's start. It is open in both the ends.
So we'll consider one organ pipe whose one point is at x is equal to 0 and the other point is at x is equal to L. Similarly, just like the closed organ pipe, also we'll consider here, but here both sides are open. One end is at x is equal to 0 and the other end is at x is equal to L. Okay. Then what we'll do here, wave will incident from this side, no problem, because both sides are open here. Tell me the equation of incident wave. S1. S1. The wave So is R propagating along. Yes, R. sine Omega minus minus kx. Y minus kx. the negative x. So Sir, going positive positive. x-axis Yes, rate yes. of propagation होगी. Wave is propagating along positive x-axis. Okay, that's why minus kx. Then S2. Wave gets reflected. Where wave gets reflected? Tell me. Wave, how the wave gets reflected here? Wave gets reflected at this open end. How is it possible? There is no obstacle, nothing. How the wave gets reflected? That is one very important point. Sir, by striking the walls. Where walls? So side. Here, the sides. But when it passes, where the wave gets reflected? That's a big question. Then a common doubt among the students. Think about it. So how is it possible? How the wave gets reflected back? It's open end. Okay, tell me. Okay, I'm telling you the answer. So according to some teachers, actually what happened here, they always say, but two concepts are here. Some teachers tell that when you blow the air and that moves, so this cross section is narrow, and when it come out to the cross section, immediately what happens? Increases. Cross Yes, section sir. increases. So here narrow and here increases. Means what happens to the velocity of sound? Increases. Increases. Velocity of sound increases. Okay. So velocity of sound, when from narrow to when go outside, inside it is in more and outside it is less. As velocity of sound is more and less, that's why there is a pressure difference in both sides. There is a pressure difference in this boundary. So this side and this side, there is a pressure difference in both sides. When it travel, go from narrow to the broad side, right? Because velocity change, according to which principle there is a pressure difference? Which principle? Tell me, we have read in fluid. Velocity differ means Bernoulli's pressure. theorem. Bernoulli's. Bernoulli's theorem, according to Bernoulli's theorem. Okay. But again, due to some teachers' concept that this is totally atmosphere, but this is a covered one. As this is a covered one, so here, the inside pressure and outside pressure are different. There is a slight difference in pressure because this is total atmosphere and this is covered one. Understood? So there is a slight difference in pressure according to some teachers' concept. Okay, whatever it may be, but what we understood, there is some pressure difference between inside and outside here. If this will take as a boundary, so inside this side and this side of the boundary, there is a pressure difference. And when there is a pressure difference, means they behave like two other medium because pressure is different. And when a wave strikes an interface, strikes the separation of two medium, then from the separation, the wave gets reflected back or not? Yes, sir. You have read also the same concept in light. When light incident on water, from air it goes to water and strike, what happens to the light? Light gets, when incident on water, light reflect or refract? Sir, refract. Not only refract, light also reflect. Okay, you have read in class 10th. When Yes, light sir. incident on a transparent medium, some percent of light gets reflected, some gets refracted, but you have given emphasis to only refraction. When light falls on a glass plate,
Glass plate, right? Reflect or refract? So both. So both. Happens. Both happens. So here also, as there is a pressure difference in both sides due to maybe any reason, doesn't matter, but it gets refracted. Now you understood there is a pressure difference means medium is different. So that's why. So pressure is not same. That's why it gets reflected back. When if it is reflected back, what is the equation? Tell me. But it's open boundary. When open boundary it gets reflected, there is no change in Phase. phase. Okay, but a directional mass change. Tell me the equation. Omega T plus Kx. Plus K. Plus Kx. Plus Kx. Then start according to superposition principle. S is equal to S1 plus S2. Then take R common, right? Sin A plus B plus sin A minus B. Quick. Sin A plus B plus sin A minus B. Right? R. If sin A plus B minus sin A minus B, then what happens here? Which trigonometric equation will you use here? Tell me. So 2 sin A into sin B. So 2 sin B. The 2 sin A cos B. Yes. 2 sin A into cos B. Okay. Then 2R cos kx into sin omega t. Then this part is as well called as what? Amplitude. Okay. But here at this end, open end. Okay, I'm showing this is open end. This is open end. So here, as it is open, here node or antinode form? Antinode. Here what form? A node or antinode? Antinode. Also antinode form. Okay. So now again let's discuss about this amplitude only. This one everybody understood? Yes. Yes, sir. Let's do here. So here amplitude, here x at x is equal to 0 antinode form. You see whether it is happening or not. At x is equal to 0, put here. What is the value of cos 0? 2R. So cos 0, 1. Cos 0. Cos 0, 1 means it is maximum. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So x is equal to 0 means amplitude is equal to maximum. Means antinode means 100% correct. Now go to this one. X is equal to L. It has to be maximum because antinode. If it has to be maximum, then what happens to cos? Cos KL has to be maximum. Maximum means plus or minus 1. Okay. So KL maximum means cos means plus or minus 1. Okay, tell me the values of a KL now. Sir, When pi. cos? Sir, n pi. So pi. 0 will not take because 0 is already taken there. Right? We'll start from pi. And 2 Then pi. 2 pi. 3 3 pi. 3 pi dot dot dot. Then it is coming n pi. Yes, sir. Where n starts from 1. I will not take 0 because 0 is already taken. In the first end, we have taken 0. Okay. So it k in place of k 2 pi by lambda. Tell me lambda is coming how much? Pi cancel. 12 by n. So this is our required expression. Any doubt? Over. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Then come to this point. Now you see. Then come to this point. So case 1. N is equal to 1. Fast normal mode of a vibration. N is equal to 1. Fast normal mode of a vibration. What happens? Lambda is how much? 12. 12. 12 by 1. So L is equal to how much? Lambda by 2. L is equal to lambda by 2. L is equal to lambda by 2. If L is equal to lambda by 2, then what is the frequency of vibration? First we'll draw the diagram then.
This is open organ pipe. Then first we'll draw the diagram. L is equal to lambda by 2. Okay. So both sides antinode must form. Lambda by 2 means how many segments? So one. Sir, 1. One. But we can't make one complete segment because both sides antinode must form. So let's divide one segment into two parts like this. Divide one segment into two parts like this. Now you understood? Yes, This sir. side lambda by 4, this side lambda by 4. Any doubt? No, sir. This side lambda 4, this side lambda by 4. Then what is the frequency of a vibration? Nu n V by lambda. Okay, here antinode, here antinode. Huh? So V by lambda. Then what is lambda? Lambda is equal to 2L. Then gamma P by rho root over. Over. So this is new one. This is called which frequency? Fundamental Sir, frequency. fundamental. Which harmonic? First harmonic. First harmonic. N is equal to 1. Case 1. First normal mode of vibration. Then we'll go to second normal mode of vibration. Understood? We will go to second normal mode of vibration. N is equal to 2. Lambda is equal to what? 2L by 2. Any L. doubt? L. Lambda is equal to 2L by 2 implies that lambda is equal to L. Tell me. Lambda is equal to L. One segment lambda by 2. But here it is coming L is equal to lambda. L is equal to lambda means how many segments? Sir, 2 segments. 2 segments. 2 segments. So let's draw one segment completely inside. This is one segment, and here half lambda by 4, and here half lambda by 4. Okay. So lambda by 4, lambda by 4. Understood? Yes, sir. Okay. So lambda by 4, lambda by 4. So this is, then what is the frequency of vibration? Come to frequency of vibration. V by lambda, lambda is L, gamma P by rho root over. How many times of fundamental frequency? Sir, 2 times. If 2 times, then this is called which harmonic? Second harmonic. Second harmonic. Which overtone? First First. First overtone. overtone. Now overtone start. First overtone. Then we'll do n is equal to 3. Okay. You all have the practice of doing like this. So we have already done it many times now. Then n is equal to 3. N is equal to 3 means lambda is equal to 2L 2L by by 3. Then L is equal to how much? 2 lambda. Sorry, 3 lambda by 2. Am I correct? Lambda is equal to 2L by 3. Then L is equal to 3 lambda by 2. Okay. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then you see. Tell me. 3 lambda by 2 means 3 segment complete. 3 segment complete means both side half segment remain. Okay. Then in between, how many complete segments? So 2. 2. 2 complete. Then here half. Then here half. Lambda by 2. Lambda by 2. Then combine both lambda by 2. So 3 lambda by 2. Over. What is the frequency? Nu 3. V by lambda. Lambda is how much? 2L by 3. So 3 by 2L. Gamma P by rho root over. Any doubt? No, sir. No, sir. How many times of fundamental frequency? Tell me. 3. 3. 3 times. Which harmonic? Third Third. harmonic. Second. Which overtone? Second. Second overtone. Okay. So this is the third normal mode of vibration. If in doubt, then you tell me. Then n is equal to n. Next normal mode of vibration. N is equal to n. What happens? Lambda is equal to 2L by n. এটা আমি ফিগার দাও করে পারিবানি খালি ফ্রিকোয়েন্সি বার করিবা
So frequency nu n is equal to n by 2l gamma p by rho root over. How many times of fundamental frequency? Sir, n times. Which harmonic? Nth harmonic. Which overtone? N minus 1. 1th overtone. Only one decrease always, so n minus 1th overtone. Got it? So this is about closed organ pipe. Then you tell me what is the difference between open organ pipe and a closed organ pipe. ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋ organ pipe use କରିଥିଲେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଦବା. Okay, what is the difference between open organ pipe and the closed organ pipe? Now see, open organ pipe, closed organ pipe, just ଦି ଜଣ ଯାକର fundamental frequency को ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖ. Open, closed. ସେମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରିsh को ଟିକେ भलरे देखिलो. ओपन ऑर्गन पाइप रे केते फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आस्तिला? टेल मी. So 1 by 4L into root over. ओपन रे ना क्लोज्ड रे? So closed ray. 1 by 4L into root over gamma gamma p by by rho. rho root over. एटी केते आस्तिला? 1 by 2L. 1 by 2L gamma p by rho root over. So which has more fundamental frequency? Which fundamental frequency is greater? Sir, open. Open. So open organ pipe fundamental frequency is twice than that of a closed organ pipe. One important line. Open organ pipe fundamental frequency is twice than that of a closed organ pipe. Second, in open organ pipe, you got all harmonics. You got all harmonics. You got first harmonic, second harmonic, third harmonic, fourth harmonic, fifth harmonic. Okay. But in closed organ pipe, what you got? Which is odd harmonic. Odd. Odd means you got first, third, fifth, seventh, ninth. Some harmonics are missing in closed organ pipe. So what is your conclusion? Which organ pipe sound is richer? Closed or open? Open. Open organ pipe, we are getting all harmonics, but in closed organ pipe, we are missing. Open organ pipe, we are getting the frequency, fundamental frequency more than closed organ pipe. So open organ pipe sound is richer. In exam question come, why the sound produced by open organ pipe is richer? Due to these two reasons what I told you. Now we come to the conclusion. Sri Krishna tale ko organ pipe use करिथिबे? Open. Open. Okay, all harmonics asibo, sound ta richer rahibo open organ pipe. Okay, so now you got to our conclusion. So this is about the organ pipe. So standing wave now we completed. Then we go to the second application, which is very easy application, a short application of superposition principle. कौन रहिला last application दा standing wave बा stationary wave परे? Beats. The next application is beats. Next application is beats. Understood? So beats वर्तमान में discussion करेगा. Beats कौन? What do you mean by beats actually? When beats is said to be formed. तो मैंने सबू musical instrument देखी थी वो. Musical instrument कथा कोनी मो musical हमारा music बाजू music device जो थे music बाजू था music player गुड़ा music player रे बात हमें laptop रे केवल जदी song play करूचो video नहीं right only song को तुम play करूचो laptop रो screen रे बेले बेले तुम मान करो उड़े display आसु थी वो समझते mark करचो कौन display आसे खाली song play कर ले खाली song play करती हो किंबा म्यूजिक सिस्टम रो जो डिस्प्ले टा थिबो से डिस्प्ले रे साउंड रो गोटे मार्क करछ एमती बॉडी जाउथबो पुनी कमी जाउथबो बॉडी जाउथबो पुनी कमी जाउथबो सब मार्क दे Yes, sir. Yes, sir. okay so that is called as a beats. That is called as beats. Understood? So what is actually beats?
बीट्स केतेबेले फॉर्म हबो दीटा वेव आ से बीट्स ता कोन दीटा वेव सेमानकर एम्प्लीट्यूड समान हेतिबो फ्रीक्वेंसी किंतु समान हे नथिबो ए पर्यंत जेते स्टैंडिंग वेव में तुम डिस्कशन कल जो दीटा कंपोनेंट वेव ऐड होतले से दीटा कंपोनेंट वेव रे कोन होतला सेमानकर कोन सेम रहउतला टेल मी फ्रीक्वेंसी सेम रहउतला ना रहउनतला Yes, sir. Yes, sir. रोतला फ्रीक्वेंसी सेम रहउतला बट एथिरे फ्रीक्वेंसी समान रहइबो की No, sir. बीट्स जेते बेले फ्रीक्वेंसी सेमानकर डिफरेंट हबो different frequency of data component wave having different frequency but same amplitude, okay, traveling in the same direction, they superimpose on each other, then what you will observe, a new wave is formed there, that's called as a bits. That not bits, a new wave is formed. See new wave ta kon form of condition kon कहली मन नइला सब समान एठी कौन फरक थिबो कौन डिफरेंस थिबो frequency frequency difference that to frequency difference is not more than 10 hertz जदि गोटे वेव रो फ्रीक्वेंसी होची 440 हर्ट्ज न्यू वन तो आ गोटे वेव रो फ्रीक्वेंसी 446 हर्ट्ज ठीक अछि 46 हर्ट्ज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम 6. 6 हर्ट्ज it cannot be more than 10 ले तुमको बीट्स किछि सुबा जीवनी बीट्स फॉर्मेशन हबनी 10 हर्ट्ज कोन पाई मोर देन 10 ले हबनी दैट एंड विल डिस्कस नाउ काहे की कंडीशन जे डीटा के वेव जो सुपर इंपोज है कि मिसिबे तांकर 10 हर्ट्ज रो अधिक फ्रीक्वेंसी ले बीट्स सुबी बना बीट्स फॉर्मेशन हबनी पण बीट्स ता कोन तो मन में क्वेश्चन आस्तो सर डीटा वेव तो मिसिबे स्टैंडिंग वेव रे हमको जेमि देखा गला स्टेशनरी ही गला एनर्जी प्रोपेगेट हेलानी पूरा एग्जैक्ट सेमति रहि गला वाला देखा गला एथिरे पुनी कोन हबो सेमति बीट्स मानने कोन हबो periodic variation of intensity means energy per unit area per unit time, that is called intensity means energy. Okay, so जो sound ता तुम सुनिबो periodic variation थिबो तार intensity रे ता energy रे periodic variation थिबो ता माने कोन एमती energy बढ़ी जाउथिबो कमी जाउथिबो बढ़ी जाउथिबो कमी जाउथिबो दैट टू सेटा पीरियडिकली हैपन होथिबो माने एमती नै जे मन इच्छा होथिबो पीरियडिकली होथिबो बढ़ुथिबो कमथिबो आ आ आ साउंड उठी जाउथिबो पुनी कमी जाउथिबो उठी जाउथिबो कमी जाउथिबो वी हैव डन इट प्रैक्टिकल वंस वी हैव डन इट तमे भी चाहिले निजे कर परिबो ओके गोटे माइक्रोफोन दीटा गर्ल दिजन को डका गला गर्ल दिजन कर फ्रीक्वेंसी पाखा पाखी समान थिबो ओके सुनिले टिके दिजन कर स्वीट स्वीट वॉइस अछि ओके दिजन को डाकिले अब बॉय गर्ल ले फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बहुत बेसी हिजबो नै सेमे दिजन गर्ल को डकाला तो जन को कहला माइक्रोफोन दियाला को साउंड प्रोड्यूस मींस खाली किछ नै खाली आ कर के धरला माइक्रोफोन दा आ मु कांस्टेंटली आ कहूची ना ओके गर्ल साउंड ना मु कहि देले ठीक किंतु आउ जन गर्ल को दियाला ता कहला तू साउंड प्रोड्यूस कर आकु बंद कराला से जेमदी आ से खला कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कहला बट ए दी जन जाकू एट ए टाइम कोन कराला साउंड प्रोड्यूस करे पे कहला जे दी जन को एट ए टाइम साउंड प्रोड्यूस करे कहला देन व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम साउंड एमती सुबिला तुम देखो दिन एट ए टाइम गुटे माइक्रोफोन दियाला जिंदे एकाठी मुह आनिले से माइक्रोफोन पाके जिंदे आ कांस्टेंट चलेले बट जेतले ऑडियंस सुनिले समस्त सुनिले सेतले कोन सुबिला आ what you mark here what happens to the intensity बढ़ुची कमुची Decrease. बढ़ुची कमुची इंटेंसिटी बढ़ी जाउची कमी जाउची ओके एमती जिंस वर्तमान एठी सुना गला अंडरस्टूड तो तमे भी चाहिले निजे घरे भी तमे निजे से बली बीट्स फॉर्मेशन करि पारिबो इट्स वेरी इजी निजे चाहिले तमे घरे बीट्स फॉर्मेशन करि पारिबो ओके केमती बीट्स तमे घरे फॉर्मेशन करिवो तमे दीटा मोबाइल फोन नबो मु तुम ट्रिक टा बतुची एवरीबॉडी कैन डू तमे भी वर्तमान करि परिबो दुईटा मोबाइल फोन तम नबो एट ए टाइम राइट गोटे मोबाइल फोन रे तमे कोन करिवो ना ऑनलाइन टोन जनरेटर
गूगल ले टाइप कर दबो ऑनलाइन टोन जनरेटर ओके ऑनलाइन टोन जनरेटर मारिबो मारी कि तमे कोन करिवो ना सेथरे गोटे ऑनलाइन टोन जे कोन जनरेटर गोटे खोलिबो खोली कि सेटा गोटे जेको गोटे टाइप करिवो you see the online tone generator I'm showing you the side this is the online tone generator right it's visible to all of you Yes, sir. Yes, sir. this is the online tone generator you make the volume high and you will play the sound if you play the sound then you will able to listen one sound here okay like this you will listen one sound and दीटा मोबाइल फोन आने मु कहिछि गोटे मोबाइल फोन रे कोन करिवो तमे 440 हर्ट्ज करी कि ताको प्ले करिवो आ गोटे मोबाइल फोन आनिवो ताको 400 एटा 40 कलर एटा तमे टाइप करी चेंज करि परिवो चाहिले मोटे टाइप करी चेंज करि परिबी एटा 444 भी मु कर दे पारि 444 कर दबो करी ताको प्ले करिवो ओके तो प्ले करी कि निजे ताको सुनिबो साउंड एटा 444 सेटा केते कहली 4 Sir, 440. 440 माने at a time dita ko mobile phone sit rakhiba now just after this class you will do immediately okay dita mobile phone घरे आनिबो मामा कर गोटे पापा कर गोटे ऑनलाइन टोन जनरेटर दीटा के टाइप कर दबो हला गोटे के 440 हर्ट्ज दे की प्ले करिवो गोटे के 444 हर्ट्ज दे की प्ले करिवो दीटा पाखा पाखी छुदबो आगे इंडिविजुअली सुनिबो एटा बंद करी हेटा सुनिबो सेटा बंद करी एटा सुनिबो तापर दीटा के एकाथर ऑन करी पाखा पाखी छुदबो तुम साउंड सुनिबो बीट्स पूरा क्लियरली तुम सुनिबो वायरेशन ऑफ इंटेंसिटी तुम क्लियरली सुनिबो केमती साउंड अप डाउन होछि ओके केमती पडुछ टू एमएमटी जत्ते अधिक फ्रीक्वेंसी तुम डिफरेंस करथबो सेते अधिक सुनिबो जत्ते कम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस करथबो सेते कासे सुन एंड पडुथबो आस्ते आस्ते पर जब बेसिक फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होबो टू just like this you can able to listen the beats after the class immediately you will do that okay you will practically realize actually what is the beats. So what I told you, when two waves traveling in the same direction of a same amplitude and having frequency difference not more than 10 hertz superimposed on each other, so there is a periodic variation of intensity. बढ़िबो आ कमिबो बढ़िबाटा को कोन कोनती मैक्सिमा कमिबाटा को कोन कोनती Minima. मिनिमा तो one maxima one minima combination is called as bits that is called beat गोटे बढ़िबा गोटे कमिबाटा को बीट बोली कहंती जेमति क्रेस्ट आउट ट्रक गोटे वेव कहंती कंबाइन करले सेमति बढ़िबा आ कमिबा गोटे बीट कहंती आ से जो टाइम लागिवो ताको कहंती जति टाइम लागिवो गोटे बीट को ताको कहंती बीट पीरियड बोली कहंती बीट पीरियड मींस गोटे मैक्सिमा गोटे मिनिमा को जति टाइम दैट इज कॉल्ड बीट पीरियड इट्स रेसिप्रोकल को कोन कहंती बीट फ्रीक्वेंसी its reciprocal is called as a beat frequency okay understood what is called a beat the combination of one maxima and one minima is called as Beat. beat maxima minima combination is called beat and the time is called beat period and its reciprocal is called beat frequency then the question is why more than 10 hertz if the frequency difference will be more than 10 hertz why beat will not be formed why what is the reason behind it can anybody tell me 10 hertz रो अधिक हले काहे कि beat formation हबनी की कहि परियो मते anyone 10 hertz रो अधिक हले काहे कि beat formation हबनी के कहबो कहि परियोनी अच्छा हो persistence of hearing persistence of vision टिके मने पके दो तुम कुछ पिला दिनर कथा persistence of vision केते सेकंड समस्त जानि छ लोअर क्लासेस रे persistence of vision persistence of hearing lower classes जानना उडा no or not if you don't know then tell me I'll tell you persistence No, of sir. hearing okay sir good. मैंने range हाँ persistence of hearing persistence of vision जदि गोटे पिक्चर को हाँ 1/10 second 1/16 second मन पड़िला Yes, Yes, sir. sir. 10 सचला
Yes, sir. मन पड़िला बे तो हला कौन सेटा 1/10 सेकंड 1/16 सेकंड 1/16 सेकंड टा कौन परसेंटेज तो हियरिंग ना विजन Vision. The vision. विजन 1/10 सेकंड है Hearing. 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 तामन लोअर क्लास टिके टिके जानि छ Yes, sir. स्टिल मु Yes, कहि sir. दउ तमन को गोटे पिक्चर परे आ गोटे पिक्चर जदि 1/16 सेकंड भितर पळे आसला ताल तमे से दीटा पिक्चर को डिस्टिंग्विश करि परिबो नाही गोटे पिक्चर परे आ गोटे पिक्चर जदि तमे आखि आगु को पळे आसला 1/16 सेकंड भितर तमे डिस्टिंग्विश करि परिबो बुझिला सेत पे वीडियो इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फोटोज ओके आउ से फोटो गुडा सब 1/16 सेकंड भितर विद इन 1/16 सेकंड तम आगरे प्ले होचंती सेत पे तम डिस्टिंग्विश करि पारुना गोटे वीडियो रे जदि गोटे हीरो गोटे विलेन को मारुची एमती हाथ ने मारला बेले पूरा कंटिन्यूअसली तुम देखो हाथटा जाउछ आ जदि 1/16 सेकंड अधिक टाइम इंटरवल से फोटो गुडा आसु थांदा तल तुम कोन देखा जानता ना हाथ एमती रहिला एमती गला एमती गला एमती गला एमती देखता पार्ट 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 कर देखता बट तुम ताको डिस्टिंग्विश करि पारु न बिकॉज़ 1/16 सेकंड विद इन 1/16 सेकंड गोटे पिक्चर पळे आसु पर्सिस्टेंस ऑफ हियरिंग कोन गोटे साउंड सुनिलो आउ गोटे साउंड जदि 1/10 सेकंड भीतर पळे आसला तल तुमको आउ से साउंड टा ए साउंड भीतर तुम डिस्टिंग्विश कर परबो जे नहीं सीटा गोटे अलगा साउंड बोली तुम डिस्टिंग्विश कर परबो सेत पई तुम 1/10 सेकंड पर जदि आउ गोटे साउंड आसला तल तुम डिस्टिंग्विश कर परबो नहीं एटा आउ गोटे अलगा साउंड बोली ओके 1/10 सेकंड तल तुम साउंड को डिस्टिंग्विश कर परबोनी दिटा अलगा अलगा बोली अलगा अलगा माने मुझे कहूँ मैक्सिमा मिनिमा तुमको तो डिस्टिंग्विश करबार अछि ना कि एटा मैक्सिमा हेटा मिनिमा बोली ओके तेणु जदि मु कोन कहली केते बेले तुम डिस्टिंग्विश कर परबोनी जदि टाइम इंटरवल टा लेस देन केते गला 1/10 सेकंड टाइम इंटरवल टा लेस देन 1/10 सेकंड तुम मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्टिंग्विश करि परिबो नाही तुम ईयर ताकू करि परिबो नाही डिस्टिंग्विश जदि टाइम टा लेस देन 1/10 सेकंड तले फ्रीक्वेंसी टा मोर देन केते 10 10 hertz. हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मोर देन 10 हर्ट्ज माने करि परिबो नाही बुझ पाइलो तले मैक्सिमम मिनिमा को तुम डिस्टिंग्विश करिबोनी जदि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ता केते मोर देन 10 hertz. एग्जाम रे जदि पडिबो व्हाई 10 हर्ट्ज इज इंपोर्टेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज तुम लिखि दो बिकॉज़ आवर परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन ईयर इज 1/10 सेकंड ओके दैट्स व्हाई simple one line answer because persistence of hearing of a human ear is less than 1/10 second or 1/10 second now you understood 1/10 second रो less हेले distinguish कर परिबनी that means frequency टा more than 10 hertz दीपटा reciprocal हेला frequency टा more than 10 hertz frequency is reciprocal of time period ना now you understood Yes, sir. okay तो मु तुमको टे ग्राफिकली देखुची तले केमिति बीट एक्चुअली फॉर्मेशन होची मु गोटे लाइन टे ड्रा करले देखो बीट केमती फॉर्मेशन होची मु एथिरे बर्तन गैप कर देली मु गैप देखोची काहे कि ना वेव गुडा सब समान गैप रे मु ड्रा करी बोली देखोची देखो गोटे वेव नेली एमती एटला गोटे वेव जार को फ्रीक्वेंसी गोटे वैल्यू अछि ओके न्यू वन फ्रीक्वेंसी सपोज एटा मु ठीक ता तळे आ गोटे वेव ड्रा करबी जोटी की फ्रीक्वेंसी टा टिके डिफर करेबी बतन टिके मोटे लगे लगे के कर देली सी तो बुझे पे मोटे लगे लगे बतन करछि माने एटा अलग फ्रीक्वेंसी रो राइट now you see different frequency okay ये different frequency देखो वर्तमान तो एबे कोन ला देखो मार्क करो तुमे ए दिटा वेव बतन ऐड हेले गोटे नुवा वेव बर्तन तैयारी होबो जार की एमानकर एम्पलीट्यूड समान अछि हैला बट फ्रीक्वेंसी एमानकर अलग अलग अछि नुवा वेव बर्तन तैयारी होबो मु से आउट लाइन टे ड्रा कर दु छी देखो क्रेस्ट को क्रेस्ट पडिछि क्रेस्ट को क्रेस्ट जेतोले मिसिबो डिस्प्लेसमेंट ता बढ़ी जिवो ना कमी जिवो तो बढ़ी जेबो ये 2 मीटर डिस्प्लेस करो ये 3 मीटर डिस्प्लेस करो तो दिजन तक मिसी जिवो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 5 मीटर डिस्प्लेस करबे त माने ए जगह रे वर्तमान वेव ता डिस्प्लेसमेंट बढ़ी गला गॉट माय पॉइंट हले क्रेस्ट क्रेस्ट देखो एठी ट्रॉ को ट्रॉ पडिछि राइट
एटी ट्र को ट्र पड़ी ता माने ए जगह रे भी डिस्प्लेसमेंट सेमती एटा बढ़िबो बढ़िला डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट बर्तन बढ़िला बट गोटे मार्कर बर्तन को जगह रे क्रेस्ट ट्र को जगह रे मिसछि निश्चय कोट ना कोटी क्रेस्ट ट्र मिसथिबो सी एटी क्रेस्ट क्रेस्ट पाखा पाखी सब अछि ए जगह रे देखो बर्तन एटी को अछि ट्र अछि एटी को अछि Crest. क्रेस्ट अछि हला ट्र क्रेस्ट अंडरस्टूड बर्तन देखो एटी क्रेस्ट अछि पाखा पाखी एटी ट्र अछि हला तमन एई जगह रे कोन अछि एम्पलीट्यूड ये क्रेस्ट को ये बर्तन ट्र को ये क्रेस्ट एदिरा बर्तन एटी मिसचंती एटी मिसले एई जगह रे कोन हबो Sir, decrease habo. बर्तमान एठी एम्पलीट्यूड ता कमी जिवो ता माने बर्तन ये आस्ते आस्ते कमी कमी आसे एई जगह रे ठीक कोन हबो ना पूरा कमी जिवो एई जगह रे पूरा कमी जिवो एमती अंडरस्टूड एई जगह रे पूरा कमी जिवो तो पुणी आउथरे ता एम्पलीट्यूड पुणी बढ़ी जिवो पुणी एम्पलीट्यूड बढ़ी जिवो पुणी आउथरे जोटी क्रेस्ट आस्तिबो हला पुणी बढ़ी के पुणी आउथरे कमी जिवो कमी एठी देखो एठी पाखा पाखी क्रेस्ट ट्र आसी एठी कमी जिवो हला दिस द मैक्सिमा मिनिमा गॉट माय पॉइंट ओके जोटी क्रेस्ट क्रेस्ट सेठी बॉडी जाउतबो जोटी ट्र ट्र सेठी कमी जाउतबो बट मु जो ड्रॉ कली निजे हाथ रे ड्रॉ कर देली जदी मु स्केल पकी ड्रॉ करतन तले बहुत भलो आस्तांदा बोले बट तमन को मु देखै दोची तो बहुत भलो जिंस बोले केमती क्रेस्ट ट्र देयर आर डिफरेंस केमती आसबो एग्जैक्टली हाउ द डिफरेंस विल बी नाउ यू कैन एबल टू सी crest straw difference you see all of you this one you see it's visible Yes, sir. okay it's visible to all of you see the difference here देखो जोटी क्रेस्ट क्रेस्ट मिसची बट जो जगह ट्र मिसची तुम निजे मार्क करो क्रेस्ट ट्र देखो क्रेस्ट ट्र निजे मार्क करो कोटी क्रेस्ट ट्र मिसची सी हियर क्रेस्ट ट्र बट क्रेस्ट क्रेस्ट माने रेड टा ऊपर को थिबो आउ ता तळे जो कलर टा अछि से भी ऊपर को थिबो ओके ब्लू रेड ब्लू आ जोटी रेड तळ को थिबो ब्लू ऊपर को थिबो से जगह सब देखो मिनिमम इंटेंसिटी सी हियर maxima then minima okay I would be देखो एटा बहुत क्लियर थिबो see here see this one बतन दीटा के जाउ छंदी बतन ए पर्यंत तांको रिजल्टेंट दिया हेनी बट त मार्क करो को जगह रे क्रेस्ट रो मिस छंदी कोटी क्रेस्ट के 8 मार्क करो 8 तुमको मु पॉज करके देखौ छी see here स्टार्टिंग रू टिके 1 2 3 क्रेस्ट क्रेस्ट मिशन देखाउ छ पूरा Yes, sir. Yes, sir. बट Yes. आगो को पळे आसले पूरा मझा मझी देखो मझा मझी कोन हिची एटी क्रेस्ट क्रेस्ट स्टार्टिंग रे क्रेस्ट क्रेस्ट बट मझा मझी कोन अछि Crest rough. क्रेस्ट का दीटा जदी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हला तांकर ए भलिया ओवरलैप होबो ओके देखो बर्तन एबे सारे मिसला पर देखो तांकर बर्तन एबे तांकर रिजल्टेंट वेबटा आस्ते आस्ते बर्तन आसीबो देखो एटो ड्रॉ करा है ने पर्यंत आपरे रिजल्टेंट वेबटा आसीबो ना यू सी देखो एबे आसी गला ना यू सी मार्क क्लियरली जोटी क्रेस्ट रो मिसचंती सेठी एम्पलीट्यूड टा देखो लेस आसी जोटी क्रेस्ट क्रेस्ट एम्पलीट्यूड देखो बहुत आसी अधिक मींस इंटेंसिटी के मोर क्लियरली जाना पड़छ वर्तमान हला so this is called as bit now you see this is the pure bit ta eta batan pure bit you can able to mark it minima maxima then after maxima again it will come minima this is called a bit hope everybody now understood Yes, what is sir. exactly bit okay this is called bit but mathematically we'll see how this bit is formed practical we observe the bit okay निजे पे मैं प्रैक्टिकली कर परिबे घर तमन को मु कहली तो मैथमेटिकली हमें बिट को केमते आनिबा दीटा वेव को हमें नै जिबा एग्जांपल सपोज r sin ओमेगा 1 t मोटे x नोनी काहे कि जो बिट फॉर्मेशन होबो गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे हम बर्तन स्टडी करबा we study at a particular point गोटे पॉइंट जेतले से दीटा के मिसिबे then what will happen ओके से पे x टा को मु सपोज 0 नै गली सपोज ओरिजिन रे मु बर्तन ऑब्जर्व करूची जेतले दीटा को वेव्स के मिसुचन means I have taken x is equal to 0 okay at origin we'll see and another wave
Okay, sorry, this is not new one actually. This is S1. This is another wave, S2 R sin omega 2t. तमें केमती जानलो एटी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट बोली जेटा इक्वेशन रो सर ओमेगा डिफरेंट अछि Omega. ओके गुड r sin omega 1 जगह मु लिखि देबी कि 2 pi nu 1 t एटी लिखि देबी कि 2 pi nu 2 t nu 1 nu 2 डिफरेंट अछि and nu 1 minus nu 2 must be less than how much hertz 10 hertz. 10. must be nu 1 minus nu 2 nu 1 minus nu 2 must be less than 10 hertz otherwise beat formation हबनी एबे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम एटा का ऐड करबा s1 plus s2 बटन 7 को ऐड करो r को तमे कॉमन नै जो sin 2 pi nu 1 t plus sin 2 pi nu 2 t को एटी को ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पडिबो ना यू टेल मी सब तो मैथमेटिक्स तमन को हैरान कला Sir, which 2 trigonometric sin formula will be it? Sir, 2 sin a plus b by 2 into cos 2 a minus b by 2. Okay, tell me the mathematical formula again. Sin A plus sin B. Tell me the mathematical formula. What will we use here? Quick. Sin A cos B plus cos A sin B. Sin. Sin A cos B plus cos A sin B. Tell me clearly. So 2 sin A plus B by 2 into cos A minus B by 2. Okay, good. So 2 sin A plus B by 2. A plus B by 2. ता माने 2 pi मु कॉमन नहीं जाउची nu 1 plus nu 2 t by 2 into cos A minus B by 2. 2 pi nu 1 minus nu 2 into t by 2. Okay. So 2r मु आगे cos टा लिखि दोची sin टा पछु को रखिबी कने अगर सब sin थिला लास्ट को तो एथरे मु sin रखि देबी लास्ट को तो cos 2 2 कटि गला एटी pi nu 1 minus nu 2 whole into t एटी sin pi nu 1 plus nu 2 whole into t. So this is the amplitude. Okay. So here what happens? Amplitude varies with time. Standing wave रे मु किंतु कहथिले amplitude varies with distance. देखो सब standing wave expression एठी आसुतबो kx cos kx sin kx because amplitude varies with distance. Different जगह रे different amplitude. But एठी ଗୋଟେ particular जगह रे जेतले दीटा वेव मिसुछंती केतेबेले मैक्सिमा आसी गलानी तो केतेले मिनिमा केतेले मैक्सिमा आसी गलानी तो केतेले मिनिमा ओके एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सो एम्प्लीट्यूड वेरीज विथ टाइम हियर सो सेट में बेले बेले आसबो एग्जाम रे क्वेश्चन गोटे इक्वेशन लिखि देबो को डिस्टिंग्विश द इक्वेशन इट इज प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव और बीट्स यदि प्रोग्रेसिव वेव हेतिबो ताले एम्प्लीट्यूड कांस्टेंट हेतिबो खाली आर लागितिबो नले वैल्यू गोटे थिबो 10 थिबो 5 थिबो किछि न जदि स्टैंडिंग वेव हेतिबो ताले से एम्प्लीट्यूड संगे sin kx और cos kx केमति गोटे टर्म थिबो कैन एम्प्लीट्यूड वेरीज विथ डिस्टेंस जदि बीट्स हेतिबो ताले से एम्प्लीट्यूड संगे t फंक्शन थिबो cos t sin t ओके एमति गोटे फंक्शन थिबो तापरटा तो थिबो निश्चय sin ओमेगा t कि cos ओमेगा t एंडिंग ता तो श्योर रहइबो सब इक्वेशन रे एंडिंग लास्ट को रहइबो sin ओमेगा t कि cos ओमेगा t बट ता पूर्वरु जोटा थिबो ओके सेटा जदि टाइम फंक्शन अछि ए भलिया cos ओमेगा t जदि एमति थिबो एटाला बीट्स amplitude varies with the time. So this is the amplitude here, right? So now let's discuss that amplitude. Amplitude को हम केवल बतन डिस्कशन करें. Amplitude is coming to r cos pi nu 1 minus nu 2 whole into t. Case 1 maxima केतेबेले एटा maximum हबो? Tell me. Case 1 केतेबेले एटा maximum हबो? Maxima. When frequency are equal. This term will be maximum. When? Tell me. Maximum means cos pi
nu1 minus nu2 whole into t is equal to how much? Plus minus 1. Plus minus Plus or minus 1. So implies that pi whole into nu1 minus nu2 into t is equal to how much? 0. Zero. Pi. 2 pi means how much? N pi. Where Yes, n starts from 0. 0, 1, 2, 3 dot dot like this. Pi whole into nu1 minus nu2 whole into t. So pi pi cancel. So t is equal to how much? N by Nu1 nu1 minus nu2. ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାରି କରିବ ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ ଟା। ଓକେ, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ କେବଳ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଏଠି। तो टाइम अनुसार भ्यारी करिवो ता माने टी रो को वैल्यू रे सब मैक्सिमम आसीबो एन जगह रे फर्स्ट 0 पकाओ 0 एन जगह रे 1 पकाओ केते आसला एन जगह रे 2 पकाओ ए टाइम गुडा के सब मैक्सिमम आसीबो गॉट माय पॉइंट माने मैक्सिमम इंटेंसिटी आसीबो ओके मु तुमको कहथिली गोटे मैक्सिमम गोटे मिनिमम को बीट बेली कहंती गोटे मैक्सिमम गोटे मिनिमम ओके तने बीट टा केतले कंप्लीट हेबो ना गोटे मैक्सिमा जेतले आउ गोटे मैक्सिमा आरंभ होबो सेतले न गोटे बीट कंप्लीट हैला मते को दीटा मैक्सिमा भीतर डिफरेंस टाइम डिफरेंस केते आसला आइदर एथरो एटा माइनस करो नले एथरो एटा माइनस करो केते आसला डिफरेंस So 1 by 1 nu1 by nu1 minus nu2. आकु कोन बेली कहंती बीट कोन कहतिली Bit Period. period. बीट पीरियड दिटा कंसेक्यूटिव मैक्सिमा भीतर जो टाइम गैप दैट इज कॉल्ड बीट पीरियड ओके तार रेसिप्रोकल लेल ताकु कोन कहबा बीट frequency. केते आसला दिस इज कॉल्ड बीट u1 फ्रीक्वेंसी वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला जदि तुमको दीटा वेव मु देबी गोटे देबी 440 हर्ट्ज ता संगे आ गोटे वेव मिसुची 448 हर्ट्ज ताल तांका भीतर जो बीट फॉर्मेशन हला से बीट फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी केते माने मैक्सिमम मिनिमम को रेट रे वेरी करिवो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ना तो फ्रीक्वेंसी केते आसीबो वेरी सिंपल nu1 minus nu2 or nu2 minus nu1 how much it is coming 8 hertz. 8 hertz this is called beat frequency खाली जस्ट तांको माइनस कर दो nu1 minus nu2 is called as beat frequency खाली जस्ट माइनस कर दो ताको आ किछि नै एग्जैक्ट जेमति मैक्सिमा कला सेमति मिनिमम भी हबो एग्जैक्ट सेमति मिनिमम हबो मिनिमम मते कोतले एटा कोन आसीबो टेल मी मिनिमा केस 2 मिनिमा एम्पलीट्यूड हबो मिनिमम मींस केते 0 0. मिनिमम मींस 0 तो 0 बट कमी 0 हिजबो मिनिमम कमी 0 हिजबो ओके ताले 0 मींस एटा केते आसीबो पाई बाय Pi 2 by 2. 3 3 पाई बाय pi 2 डॉट 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 2n केते करबा 2n minus 1 कले n टा जेतले हम 0 स्टार्ट करबा एटा जो 2n plus 1 करो 2n plus 1 pi by 2 n केतरो स्टार्ट हला 0 1 2 3 dot 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 got it 2n plus 1 whole into pi by 2 no problem any doubt pi No, pi sir. cancel from both sides pi cancel from both sides then it is coming 2n plus 1 t is coming 2n plus 1 whole divided by nu1 minus nu2 okay got it or any doubt see then at which points the time is minima is coming Sir, in the denominator you have to multiply 2. denominator t is there na so t is equal to I wrote 2n plus 1 by nu1 minus nu2 any problem in mathematics सर तोळे सर 2 रे सर पाई बाय 2 दे पाई बाय 2 अछि oh it's a pi by 2 achi so it would 2 rahebo na Yes, sir. okay good tell me so tell me the times को टाइम रे सब आसीबो पुणी आउथरे को 1 by एटा n जगह रे 0 पकाओ केते गेला एटा 1 हे गेला 1 by 2 whole into nu1 minus nu2 is it clear Yes, sir. ओके ताले एटा ठीक देखो दीटा मैक्सिमा रे मझिरे असला नहीं Sir, पूर्व 0.
पूर्व दिटा मैक्सिमा देख एन जगह मु 0 पकेल ना फर्स्ट 1 बाय एतिक आसलानी am I correct? Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट 1 जगह एन जगह 1 पके केते आसला 3/2 होल इनटू न्यू 1 माइनस न्यू 2 चलला प्रोसीजन तो तुम कोन मार्क कल दीटा मैक्सिमा रो मझी गुडा के सो मिनिमम 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 आसला ना नहीं Yes, sir. अंडरस्टूड maxima minima then maxima minima तब 0 रे आस्तला maxima 1 by new 1 minus new 2 रे next maxima आस्तला but ये आस्तला 1 by 2 whole into new 1 minus new 2 माने तांका मझी आस्तला पुनी मिनिमा मिनिमा को जतो माइनस कर दिले कंसेक्यूटिव मिनिमा तमे पुनी बीट पीरियड पाइबो एका जिंस मैक्सिमा मैक्सिमा माइनस कले बीट पीरियड मिनिमा मिनिमा माइनस कले बीट पीरियड तमे देखो माइनस करके दीटा के एतिकी आसीबो पक्का तार रेसिप्रोकल नबे एतिकी आसीबो पक्का बीट फ्रीक्वेंसी now you understood bits how the bits produced. Yes, sir. So this is the formation of bits. But the question is coming to your mind, sir, bits तमे पढ़ी देलु but bits हम day to day life रे कोठी यूज होछि. If bits day to day life रे यूज कोठी होछि. Actually where it is used in day to day life. Many places these bits are used. बहुत जगह रे bit यूज होछि. First तुमको कहली त नंबर 1 एला first यूज तुमको कोछि applications of bits. Applications. Tuning of musical instruments. कौन ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तमे देखि तो म्यूजिशियन माने कोन करंती तांकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जते बेले आरंभ हबो जते बेले शो आरंभ हबो ता पूर्वरु समान ताकू लगा लगी करी के सब टुंग 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 तांकर कर चलथे बसी कनेक्शन कर सकते बट बसी टुंग 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 करते तुम जे कोन करूछन आज्ञा आपण माने कोन टुंग 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 करले ने आधा घंटा हम सब अपेक्षा करिछु कोन चलछि ठीक है हम ट्यूनिंग करूछु व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूनिंग ट्यूनिंग माने कोन it is used for tuning of musical instrument सेमानकर गोटे फ्रीक्वेंसी अलरेडी अछि तांको पाखरे जे एई फ्रीक्वेंसी तार साउंड ता ए स्ट्रिंग रो आसीबा दरकार ए स्ट्रिंग रो ए फ्रीक्वेंसी रो साउंड आसीबो पर जदी से बाय चांस टिके लूज हो जाईची ता नोट ता टिके कोन टिके असुविधा अछि से जेतले ताकू टिंग रे बजौछन से फ्रीक्वेंसी रो साउंड ता चित्र आसुनी तांको पाखरे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ता अछि ओके सेवन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ता रखि थांती ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ता पतन बाजुची सेथरो टिंग 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 बाजुची सेथरो जेतले सेमान तांगर बजेले से टिंग टिंग से सेम फ्रीक्वेंसी मैच करिया दरकार जदि मैच न कला टिके स्लाइट डिफरेंस आसला फ्रीक्वेंसी रो स्लाइट डिफरेंस आसला माने दीटा के वेव मिस के संग संग कोन फॉर्मेशन हे जिवो Beat. बीट हे जिवो बीट माने सेटा टिके साउंड ता वेरी करिवो साउंड ता वेरी कर जेमते तुम कहितली हला मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम टुन 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 एमती हबो एमती ले से जानिबे बीट तक से माने फील कर परिबे ओके से माने जो म्यूजिक प्ले करछन से बीट तक फील कर परिबे बीट्स फील कर परिबे से ना फ्रीक्वेंसी बेबी मैच करनी जेतले बीट्स जमा आसीबनी ता माने ट्यूनिंग हे गला फ्रीक्वेंसी पूरा मैच हे गला सेम सेम 444 444 444 444 व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी 0. means no beat is formed means no beat is formed ता माने पूरा मैच करेगा understood my point for tuning of a musical instrument आ गोटे तम माने टिके हायर क्लास स्कूल भला भी पढिबो हला for detection of a mass gas mines रे mass gas detection पई को यूज करा जाए बीट्स की यूज करा जाए आउ बीट्स कोठी यूज करा जाए आ गोटे इंपोर्टेंट एप्लीकेशन बीट्स रे यूज करा जाए कोठी ना टू नो टू डिटरमाइन अननोन फ्रीक्वेंसी मु तुमको गोटे ट्यूनिंग फॉर्ट देबी जा फ्रीक्वेंसी तुम जानी ना बा जोठी फ्रीक्वेंसी लिखा है मु ताको कोन करछि कवर कर देछि तुमको फ्रीक्वेंसी मु देनी मु आ गोटे ट्यूनिंग फॉर्क रो हेल्प तमे नबो जा फ्रीक्वेंसी तुम जानि छ पहले आ थ्रू रो ए बीट्स हेल्प रे तमे अननोन ट्यूनिंग फॉर्क रो फ्रीक्वेंसी जानि दबो ताको कोनती लोडिंग मेथड गोटे मेथड अछि लोडिंग मेथड बा फिलिंग मेथड भी अछि मु तो लोडिंग मेथड ता बत दउ जे एग्जाम रे क्वेश्चन पड़े लोडिंग मेथड द्वारा तुम अननोन फ्रीक्वेंसी जान दो केमते अननोन फ्रीक्वेंसी जानिबो देखो गोटे सिंपल एग्जांपल कहूची तुम एटा जानिनो आ फ्रीक्वेंसी लेखाडा को तुम जानिनो बट आ फ्रीक्वेंसी जानछो तुम राइट एटा न्यू 1 एटा न्यू 2 जोटा कि क्वेश्चन मार्क तुम मान को पे तुम जानिनो तुम कोन करबो ना दीटा को ट्यूनिंग फॉर को एका बेले बाडेबो
तांको भितर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जदी थिबो निश्चित बीट्स फॉर्मेशन मनकर बीट्स फॉर्मेशन हेलानी ताल त आंसर पाई गेलो डायरेक्ट जदी बीट्स फॉर्मेशन हबनी तुम डायरेक्ट आंसर पाई गेलो केते आंसर आसी जिवो 0 जीरो जदी बीट difference फ्रीक्वेंसी हां तल जीरो डिफरेंस तो मनकर एटा होची 480 तल एटा केते हेतिबो श्योर 480 480 सल्ला गोटे थर आंसर पाई गेलो मनकर तुम बाडेला पर बीट आसला एटा होची 480 न्यू वन टा तमे एटा बाडेला पर सेथरे बीट आसला सपोज बीट फ्रीक्वेंसी केते आसला ना 4 आसला जदि बीट 4 आसला बीट को तमे निजे मार्क करबो ना हैला केतरा एमति मैक्सिमम मिनिमम काउंट करके देखियो 1 सेकंड भीतर केतरा आसला ताको बीट फ्रीक्वेंसी बोल तम सेटा को तुमको काउंट करिया पड़ियो मैक्सिमम मिनिमम केतरा आसला देखियो मानकर बीट फ्रीक्वेंसी 4 आसला तले मते कोइडा केते हेतिबो 484 484 इज इट करेक्ट गॉट द आंसर Yes, sir. is it correct or any other question is coming to your mind 484 are you sure Less. are you sure 484 or any other value 476 476. that's the point 484 की कहला that may be 476 सही न्यूटा आटू कम भी हेते पारे तमे केमती जानले जे सेरा अधिक थियो बोली कारण जदी कम भी हेतिबो तो भी आसबो देखो मु एटी न्यू 2 टा को लिखुची छाडी की न्यू 2 एटा भी न्यू 2 हेते पारे 476 हेले सेही भी तो 4 होबो ना जदी 4 बीट फ्रीक्वेंसी आसी एटा उस तमर नोन टा एटा अननोन टा न्यू 2 टा दैट मे बी 484 और दैट मे बी 476 कोटा तला आंसर 476 ना 484 एबे क्वेश्चन मन भीतर आसला नाउ द कंफ्यूजन स्टार्ट और नॉट सिटी Yes. तमे कोन करबो लोडिंग मेथड रा हेल्प नबा कोन लोडिंग मेथड तमे से ट्यूनिंग फॉर्क रा गोटे प्रोंग को कोन करबो ना वैक्स रे बुडे दबो लिक्विड वैक्स रे किंबा सेथिरे कोन गोटे छोटो मेटल पीस टे अटैच कर दबो किंबा ताकू वैक्स रे बुडे दबो वैक्स बुडे दबो माने लिक्विड वैक्स जंचो वैक्स को गरम करले से लिक्विड हो जिवो तबर बुडे देके बाहर कर देले तादरे वैक्स रे गोटे लेयर लागि जिवो सेमती करिया द्वारा कोन हुए ना ट्यूनिंग फॉर्क रा फ्रीक्वेंसी कमी जाए मन रखो लोड करी देले ट्यूनिंग फॉर्क रा फ्रीक्वेंसी कमी जिवो एक कतरा मन रखिता फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जिवो तमे बबे ताकू वैक्स रे कोन करले लोड करले तमे तो फ्रीक्वेंसी जानि न किछि नै तमे तर गोटे प्रोंग को वैक्स रे लोड कर देला वैक्स लगे देला गोटे प्रोंग रे हला लिक्विड वैक्स रे बुडे देला बाहर कर ठंडा गेले से वैक्स लागि गेला तापर एबे ताकू पुणी अथरे बडा पुणी बाडी की पुणी बीट कैलकुलेट करो माने बीट पुणी अथरे देख केते आसला मने करो तमे बाडेला परे तार बीट वर्णिंग कर वर्तमान आसिला फॉर एग्जांपल तम मन को कहूची सपोज ता बीट आसला 6 ए 4 जगह 6 आसला तले मते को कोटा करेक्ट हेतिबो तले एटा करेक्ट ना एटा करेक्ट मु तुमको कहिची बुडे देला परे फ्रीक्वेंसी तार कमी जिवो जहा थिबो कमी जिवो तो मते दीटा वैल्यू को नेकी स्ट्रगल करूछ जहा थिबो कमी जिवो बुडे देला परे 484 टा कमी जिवो 476 भी कमी जिवो बीट फ्रीक्वेंसी को केस रे बढ़ी जिवो मते को एटी बढ़ी जिवो ना एटी बढ़ी जिवो ये कमी जिवो ये भी कमी जिवो टेल मी सपोज एटा हेतिबो किबा एटा हेतिबो जोटा भी हो ओके देखियो ताले मु आंसर करके देखुची ठीक अछि गोटे काम करिया अच्छा मु कहली ये कमी जिवो अच्छा ये कमी जिवो ये कमी के मन कर केते गेला 472 गेला yes sir सपोज काना वैक्स रे बुडला माने ये कमी जिवो वैक्स रे बुडला माने ये भी कमी जिवो ये मन कर कमी की 480 गेला 480 को 482 हे गेला हला ये भी कमी गेला ये भी कमी गेला मते कहले ये किंतु 480 अछि ये त हमर सबले 480 हला मते कोइ डिफरेंस केते आसला sir 8 8 80 डिफरेंस केते आसला 2 2 ता माने तमे वैक्स रे बाडे बुडेई की तापरे पिटला परे जदी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ी गला जदी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ी गला ताल तमर कोन -4 ना +4 -4. अननोन टा -4 जदी बीट फ्रीक्वेंसी कमी गला +4. +4 ता माने सेटा अधिक थिला अरे एटा अधिक थिला बेल तो एटा कमी गला बेली डिफरेंस टा कम आछे ना बुझ पछ ना नहीं हला Yes. देखो सर आउथर सर आउथरे कहि दोछि केना बहुत कॉम्प्लिकेटेड माने बहुत मुंडो खर्च करिया पड़िबो तुमको 484 जणा 480 जणा अछि बट ए दिरा तुम जानि न ए दिरा अननोन तमे किंतु बाडे की देखिला प्रथमे तार बीट फ्रीक्वेंसी आसला 4
तमें तुम पाखे दीटा ऑप्शन आसला एटा 484 हेइ पारे 476 हेइ पारे दीटा ऑप्शन आसला तापर तमें ताको वैक्स रे बुड़ाई देलो वैक्स रे बुड़ाई देला माने फ्रीक्वेंसी श्योर कमी जिवो फ्रीक्वेंसी श्योर कमी जिवो त निजर ओन फ्रीक्वेंसी कमी जिवो बतन 476 फ्रीक्वेंसी कमी केते गला सपोज 472 गला 484 कमी केते गला सपोज केते गला 482 गला ओके तले एबे तले बाडेबो तमे एबे तमे केते बीट फ्रीक्वेंसी पाइबो 2 एपटे बाडेले केते बीट फ्रीक्वेंसी पाइबो 8 8 तामाने वैक्स रे बुडे सरला परे जदी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ी गला इंक्रीज करी गला तामाने तम ओरिजिनल टा होची तमर जो अननोन टा होची एटा काने जे लेस थिला से कमी गले डिफरेंस टा बढ़ी जिवो ना Yes, sir. Yes, sir. जे मोर थिला तार कमी गला जदी डिफरेंस टा कमी जिवो ना yes sir Yes, sir. बुझ परछो गोटे सिंपल एग्जांपल कहूची 10 आउ 15 15 टा जतले कमी की 13 हे जिवो ताले आंको डिफरेंस टा कोन हबो 3. कम डिफरेंस टा कोन हबो कमी जिवो ना कमिजिबो आगुरु 5 थिला बे कमी गला बुझला ना कोन कहली बट एटा 10 रु जदी एटा 7 थिला बतन 7 टा कमी की कोन हला ना 5 हे गला जदी 7 टा कमी की 5 हे जिवो ताले आंको डिफरेंस टा कोन हबो बढ़ी जिवोनी Yes, sir. Yes, sir. 7 टा कमी की 5 हे गला डिफरेंस टा आहुरी बढ़ी गला बुझ परछो त तमाने जदी बीट तमाने तुम कंक्लूजन ने पहुंचलो लोडिंग परे आफ्टर लोडिंग इफ बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस then the unknown frequency nu 2 is equal to known frequency minus bit frequency. After loading, if bit frequency increases, unknown frequency is equal to this. Concluding line I am telling you. Okay, answer बहुत सहज किंतु बुझीबाटा होचे important. सेटपन तुमको कहि वेब रे बहुत मुंड खर्च करिया पड़िबो. After loading, if bit frequency decreases, after loading, if bit frequency decreases, then unknown frequency is known frequency plus beat. बीट फ्रीक्वेंसी तामाने एटा आंसर जदी बीट माने वाक्स रे बुडे सला पर तम बाडेले बीट फ्रीक्वेंसी कमी जाउची तामे तमरो अछि ग्रेटर अननोन टू ये ग्रेटर अछि सॉरी नोन टू ये ग्रेटर अछि जदी बढ़ी जाउची बीट फ्रीक्वेंसी तले नोन टू ये लेस अछि मतलब कंक्लूडिंग लाइन ता सहज बट इफ योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर okay so this is all about bits hope you understood